ब्रेक के बाद रुक करेंगे गुजरात बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी छोटा उदयपुर की, जहां पशुपालकों को दूध का पैसा लेने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बात होगी गांधीनगर की, जहां गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र की घोषणा कर दी गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर छोटा उदयपुर से, जहां जैतपुर पावी तहसील के पशुपालकों को दूध का पैसा लेने के लिए कोऑपरेटिव बैंक में लंबी कतार में खड़े होकर तपस्या करनी पड़ी। ये समस्या काफ़ी लंबे समय से चल रही है। प्रशासन कोई हल निकाल पाता है या वैसे ही चलता रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। छोटा उदयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गुलाब राठवा की रिपोर्ट। खबर गांधीनगर से, जहां गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र की घोषणा माननीय राज्यपाल के 7वें सत्र का आह्वान किया गया। मानसून सत्र 8, 9 और 10 सितंबर को आयोजित होगा। आज से 20 अगस्त तक विधायक तारांकित प्रश्नों पर निर्देश दे सकेंगे। विधानाध्यापक अध्यक्ष शंकर चौधरी ने मानसून सत्र के संबंध में जानकारी दी। गुजरात विधानसभा ने सत्र के संबंध में अधिसूचना जारी की है। गुजरात राज्यना मान्य राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रतजीए 15મી વિધાનસભાના 7મા સત્રનું આહવાન કર્યું છે। આ ચોમાસું સત્ર તારીખ 8, 9, 10 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન બોલાવવામાં આવ્યું છે। ગુજરાત વિધાનસભાએ જેની અંદર માન્ય ધારાસભ્યશ્રીઓ પ્રશ્નો પણ પૂછી શકે તે માટે આજથી કરી અને તારીખ 18, 19, 20 ઓગસ્ટ સુધી તેઓ પોતાના પ્રશ્નો ડાયરેક્ટ પણ નોટિસ આપી શકશે અને અહીંયા આવીને પ્રત્યક્ષ રીતે પણ દાખલ કરી શકશે। તો એક ઓનલાઈન તેમજ પ્રત્યક્ષ આપવાની બંને પદ્ધતિ ચાલુ રહેશે। ખાસ કરીને 3 દિવસ દરમિયાન સરકારી કામકાજમાં જીએસટી સુધારા વિધેયક તેમજ ફેક્ટરી એક્ટ સુધારા વિધેયક આ બંનેના જે વટહુકમ છે તે અંગે પણ વિધાનસભામાં રજૂ થશે। તે સિવાય પણ જો સરકાર પાસે કોઈ બાકીનું કામકાજ હશે તો એ પણ જ્યારે રજૂ થશે ત્યારે આગળ લેવામાં આવશે। કામકાજ સલાહકાર સમિતિની મિટિંગ જે છે એ તારીખ 6/9/2025ના રોજ શનિવારના બોલાવવામાં આવશે। તેની અંદર બાકીના વિગતવાર જે કામો છે તેની ચર્ચા કરવામાં આવશે। गांधीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता अमित की रिपोर्ट। अरावली जिले के धनसुरा तालुका के रहयोल स्थित गोपाल स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड में आग लगने की घटना का मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख अग्निशमन कर्मियों पारधी दिलीप भाई पटेल पार्थ और निकुंज भाई पटेल द्वारा एक बेहद खूबसूरत बचाव अभियान चलाया गया। इस मॉक ड्रिल के बाद वहां के कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में कैसे बचें, अग्नि सुरक्षा उपकरणों का उपयोग कैसे करें, इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में अरावली के डीपीओ आपदा बीए महिदा, मोडासा स्टेशन अग्निशमन अधिकारी हेमराज सिंह बाघेला, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिक्का के सीएचओ और उनके कर्मचारी उपस्थित थे। डीपीओ ने आपदा क्या है और आपदा की स्थिति में कैसे बचाव करें और लाइन विभाग को सूचित करें, इसकी जानकारी दी और 1077 हेल्पलाइन के बारे में भी जानकारी दी। कंपनी के सभी कर्मचारियों ने इस मॉक ड्रिल में भाग लिया। सफल बचाव के बाद बचाव कार्य पूरा घोषित किया। अरावली से सी न्यूज़ संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। खबर गुजरात के अरावली से, जहां धनसुरा किसान संघ ने रासायनिक उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि को लेकर धनसुरा मामलतदार कार्यालय में एक याचिका प्रस्तुत की। इसमें महासचिव ने कहा कि अगर मूल्य वृद्धि वापस नहीं ली गई तो उन्होंने आंदोलन शुरू करने की धमकी दी। मारू नाम दिलीप भाई के पटेल, धनसुरा दौलपुर कंपानो રહેવાસી છું અને ભારતીય કિસાન સંઘ ધનસુરા તાલુકાનો સભ્ય છું। અરવલ્લી જિલ્લાનો મંત્રીનું અત્યારે દાયિત્વ સ્વીકાર્યું છે મેં। આજે અમે ધનસુરા મામલતદાર કચેરી ખાતે ગુજરાત પ્રદેશની નીતિ મુજબ પૂરા ગુજરાતમાં રાસાયણિક ખાતરનો અસહ્ય ભાવ વધારો જે થયો તેના માટે અમે આવેદનપત્ર મામલતદારશ્રીને સુપ્રત કરવા આવ્યા હતા અને એ આવેદનપત્ર અમે આજે એમને આપ્યું છે। અમારી ખાસ માગણી આજે મીડિયા થ્રુ અને મામલતદાર સાહેબ થ્રુ અમે એ કહેવા માગીએ છીએ કે રાસાયણિક ખાતરમાં જે ભાવ વધારો અસહ્ય ભાવ વધારો થયો છે, જે ખેડૂતોના પડતા ઉપર પાટું મૂકવા જેવો વાત છે અને એ અસહ્ય ભાવ વધારો પાછો તાત્કાલિક ખેંચાય એના માટેની અમારી માગણી છે। અને એ જો ભાવ વધારો પાછો નહીં ખેંચાય તો પૂરા ભારતભરમાં અને ગુજરાતમાં તો ખરું જ એ ખેડૂતો રસ્તા ઉપર આવશે,
આંદોલન કરશે અને એ ન થાય તેના માટે અમે અત્યારે અમારી માગણી એ છે કે અસહ્ય ભાવ વધારો જે થયો છે એ તાત્કાલિક પાછો ખેંચાવવો જોઈએ। अरावली से सी न्यूज संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। गुजरात बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।